नमस्कार, एक बार फिर amarujala.com में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ आज वो मशहूर शख्सियत हैं जिन्होंने अपने गेंदबाजी के हुनर से देश ही नहीं दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया था। जब वो तेज गति से दौड़कर अपने रनअप से आकर गेंद फेंकते थे तो लोगों के दिल धड़कने लगते थे। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से ही नहीं, अपने पूरे व्यवहार से खेल के मैदान पर एक इस तरह का इतिहास रचा जिसको लोग आज भी याद करते हैं। हमारी पेस जोड़ी वेंकटेश प्रसाद और जवगल श्रीनाथ के मजबूत आधार स्तंभ वेंकटेश प्रसाद आज अमर उजाला के साथ हैं। वेंकटेश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू जी, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया अमर उजाला को समय देने के लिए। वेंकटेश जी, सबसे पहले तो ये कि क्रिकेट के प्रति आपका लगाव कैसे शुरू हुआ? गली मोहल्ले में तो क्रिकेट हिंदुस्तान में बहुत खेली जाती है। हर बच्चा घर में अगर बैट नहीं भी है तो ना कपड़े धोने का मुंह बोलते हैं। हम भी ऐसे किए। हम भी ऐसे खेल रहे थे या गली इधर उधर खेल रहे थे बस। एंड आई वाज फॉर्चुनेट। अपने घर, गांव और बचपन के बारे में थोड़ा बताइए। आपकी क्रिकेट की बातें ना आपके इंटरव्यूज में बहुत आती है। मैं चाहता हूँ आपकी थोड़ा सा बचपन की पर्सनल लाइफ, आप शैतान थे, पढ़ाकू थे, कैसे थे, थोड़ा वो आना चाहिए। या आई वाज वेरी मच academics मेरा इतना अच्छा नहीं था, बट आई वाज एबल टू गेट थ्रू। मैं हर सब्जेक्ट में पास हो रहा था और हर स्टैंडर्ड पास होके आगे जा रहा था मैं। बट अदरवाइज आई वाज नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, बट आई वाज मोर इनटू स्पोर्ट्स। पहले से ही बहुत खेलने का बहुत इच्छा था मेरा। एंड नॉट जस्ट क्रिकेट, मैं इनफैक्ट हॉकी खेला था स्कूल को। आई प्लेड हॉकी फॉर माई स्कूल। या क्रिकेट मेरा इट्स विद्या मंदिर, एक विद्या मंदिर हमारा ITI कॉलोनी का था। वो ITI इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज था, और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज में मेरा पिताजी काम कर रहे थे। और एक ब्यूटीफुल कॉलोनी, वन ऑफ द बेस्ट कॉलोनी उधर। अच्छा, एब्सोल्युटली वन ऑफ द बेस्ट आई वुड से। एंड उधर हर चीज थे, हर तरीके का फैसिलिटीज थे। क्रिकेट ग्राउंड था, फुटबॉल ग्राउंड था, ऐसे हॉकी ग्राउंड था। It's in Bangalore, very much. I'm from Bangalore. I was born and brought up in Bangalore. And मेरा घर के सामने ही वो क्रिकेट फील्ड था। तो ऑब्वियसली वो क्रिकेट फील्ड था, मगर वो फील्ड में सब कुछ खेल रहे थे हम लोग। फुटबॉल खेल रहे थे, हम गिल्ली डंडा खेल रहे थे, और वी यूज्ड टू प्ले दैट टॉप जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, समथिंग लाइक दैट। हाँ जी, हाँ जी, इधर सितोलिया बोलते हैं। अच्छा, वो खेल रहे थे। और कबड्डी खेला हूँ मैं। और क्या है, आई मीन ऑल काइंड्स ऑफ रूरल गेम्स जो होता है ना, हर तरीके का खेल, वो सभी खेला हूँ मैं। सो आई वाज एन ऑलराउंडर। शुरुआत हॉकी से हुई, फिर क्रिकेट की तरफ कैसे आ गए? मैं वही, इट्स ऑल सीजनल स्पोर्ट था हमारा। जब बारिश आता था तो फुटबॉल चलो, या फुटबॉल का कुछ टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, समझो कहीं और वर्ल्ड कप हो रहा है, फुटबॉल चलो, सभी लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। और कुछ क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है तो क्रिकेट खेलो, ऐसे हो रहा था। बट फॉर सम रीजन आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले क्रिकेट। एक एंड आई थिंक माई इंटरेस्ट इन क्रिकेट गॉट बेटर आफ्टर 1983 का, जब कपिल डेविल्स जो बोलते हैं ना उनको, जो जब भी उन लोग 1983 वर्ल्ड कप जीते, दैट इज वेयर इट जस्ट टुक ऑफ। पूरे भारत में क्रिकेट की एक नई लहर आ गई। एब्सोल्युटली, क्रिकेट का शौक चढ़, क्योंकि लगा ही नहीं था ना कि वो टीम जीत सकती है। Exactly. I mean, nobody thought they will do it. Exactly. That was, I think, that changed. मैंने मेरे बचपन में वो फाइनल देखा है टीवी पे। हाँ जी, हाँ जी। मेरे मोहल्ले में जो माहौल था, मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। या वो क्रिकेट का लैंडस्केप ही बदल गया एक्चुअली वो जीत से। जब 1983 का जीत के बाद क्रिकेट का लैंडस्केप बदल गया, और हर बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए तरस रहे थे। एंड दे वर प्लेइंग, वांटिंग टू प्ले क्रिकेट। एंड आई ऑलवेज लव्ड दिस गेम, एंड आई ऑलवेज लव्ड बॉलिंग फास्ट। शुरू से। मगर जब मैं खेल रहा था, इट वाज ओनली टेनिस बॉल, नॉट लेदर बॉल क्रिकेट। ऐसा नहीं था, टेनिस बॉल में खेल रहे थे हम ज्यादा। या तो फिर ये लेदर बॉल वाला पेशेवर क्रिकेट, बाकायदा कोचिंग वगैरह कैसे शुरू हुई? Well, leather ball cricket started जब I was 17-18, थोड़ा लेट ही शुरू हुआ मेरा। एंड मैं अंडर 19 खेला ही नहीं। आजकल अंडर 19 इज अ स्टेपिंग स्टोन। आप चाहे स्टेट को खेलो या देश को खेलना है तो अंडर 19 इज अ स्टेपिंग स्टोन। बट आई नेवर प्लेड अंडर 19, एंड आई स्ट्रेट अवे प्लेड यूनिवर्सिटी क्रिकेट। I represented Bangalore University, and that was my big step.
Bangalore University when I represented, that was my big step. And from there, I represented state in under 21 and 23 and uske baad. So it was a process, it was a journey. Whereas my statement, as you said, Srinath, वो सीधा अंडर 23 खेला एंड एक ही साल में वो स्टेट को रिप्रेजेंट किया, अंडर 23 से स्टेट को रिप्रेजेंट किया, और सभी कुछ एक ही साल में हुआ, और अगले साल he played for the country. So that was very, very quick. And also he was an amazing bowler, very, very quick bowler. Even today, I have not seen anybody bowl as quick as Javagal Srinath. And I think he's one of the quickest bowler India has ever produced. Yeah, we mostly all will agree to that. We have seen the beauty of bowling both by you and Javagal Srinath. I did learn a lot from my senior. तब आपको लगा कि भारत का represent करेंगे? No, never. But I was just passionate. And there was no goal as such. But then for me, every match was a goal. हर मैच मेरे को जीतना है, और हर मैच में मैं 5 विकेट लेना है. I mean, कभी-कभी होता था, कभी-कभी नहीं होता था. फिर भी, the goal was there, the target was there, and I was extremely passionate. And that's why normally, what we say is, fast bowlers are born, not made. हाँ, आप किसी को create नहीं कर सकते as a fast bowler. Exactly, it has to come from within. या वो जो पैशन रहना है. का सिलेक्शन हुआ, वो मोमेंट में जानना चाहता हूँ, कैसे हुआ, क्या हुआ, how thrilled you were? Well, I was expecting. In one way, I was expecting my selections in the Indian squad. But then, मेरा एक साल, it was extremely good, but I was still not selected. I didn't get a call. So थोड़ा disappointment हो रहा था, but फिर भी, as I said, every match for me was, that I had to win, I had to do well. And that consistency I had to maintain, consistency in my performance. So eventually I knew that I'm going to get a call. And for me, Anil Kumble and Javagal Srinath, two of them who we all played together, and they were the trendsetters for all of us. जैसे मैं हो सकता हूँ, नहीं तो राहुल द्रविड़ हो सकता है, नहीं तो बहुत लोग, सुनील जोशी, डोडा गणेश, डेविड जॉनसन, Vijay Bharadwaj, Sujit Somsunda. So for all of us, Javagal Srinath and Anil Kumble were the trendsetters for us. So उन लोग represent किए, so we all wanted to follow them. And at one stage in 96, 97, or 3 साल में 96, 97, 98, half the Indian team were from Karnataka. I think that was the talent that we had, and like how Kapil Dev inspired a generation by winning 1983 World Cup. ऐसे हमारा कर्नाटका में when Anil Kumble and Javagal Srinath represented India, they inspired a generation in Karnataka. बहुत इंस्पायरिंग आपकी जर्नी रही. यंगस्टर्स के लिए भी मेरे पास एक सवाल है, लेकिन अभी मैं जानना चाहता हूँ. हाँ जी. जिस स्टेज पे हमारी इंडियन टीम है, yes, वो लगता है कि कहीं खो गई है. बार-बार एक लैब में रखी है, एक्सपेरिमेंट पे. आप विराट कोहली को वेस्ट इंडीज ले जाते हो, खिलाते ही नहीं हो. जिसको देखो वो इंजर्ड है. पहले तो बॉलर इंजर्ड होता था, आप तो पेस बॉलर है, आपको मालूम है पेस बॉलर की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है. yes. लेकिन बैट्समैन भी इंजर हो रहा है. बैट्समैन इंजर होके पड़ा हुआ है, खेल ही नहीं पा रहा है. I think probably look, experiment तो हो रहा है. Yes, correct. There is no doubt about it. But मेरा ख्याल से हाँ, आई थिंक ठीक से मेरा ख्याल से वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हैं, और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जब होता है देन नोबडी इज सेटल्ड. तो जब एक प्लेयर्स उनको वो जो कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको सिक्योरिटी नहीं है, ही इज ऑलवेज अंडर प्रेशर. और वो इवन टू मेक अ डिसीजन ही इज नॉट श्योर अबाउट इट. या ये कवड्रे मारूं या ना मारूं. कवड्रे मारने के लिए गया तो मैं एज होके मैं आउट हो गया, तो मेरे को दे कैन मेक मी सिट आउट. हाँ जी, एग्जैक्टली. तो यही शायद मेरा ख्याल से हो रहा है. पैसा बहुत बट लुक, माहौल बहुत है, प्रचार बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिकेट की जो स्पिरिट होती है. हाँ, नहीं स्पिरिट तो रहेगा. स्पिरिट तो है इवन टुडे और ऑलवेज व्हेनेवर यू आर प्लेइंग फॉर इंडिया. चाहे जो भी हो, आप हार रहे हो या जीत रहे हो या चेंजेस हो रहा है, फिर भी
when you're playing for the country, that you're representing the country, that spirit is there. I'm completely behind the players. I'm completely behind the players even now. And nowhere I would like to clarify here, nowhere in my tweet or in my जो social media platform में जो भी मैं बोल रहा हूँ, it is not to put down anybody. I would like to clarify that, not to put down anybody. And it's always, I'm thinking of the betterment of the game, betterment of the players, and I'm bringing out my opinion. That's about it, which could do a lot of good to the team and to the players. That's about it. Not to bring anybody down for that, for sure. Point taken. और बिल्कुल अच्छा है, जिन लोगों को शायद भ्रम होगा वो स्पष्ट भी हो जाएगा। अभी भी इंडिया एक वापस से अच्छे पेस बॉलर के लिए तरस रहा है। हैं बॉलर्स? Of course, yes. पर वो चीज नहीं है जो एक पेस होता है, किलर इंस्टिंक्ट होता है। तो उसके लिए आपको यंग बॉलर्स भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि हाउ शुड दे ट्रेन देमसेल्व्स? No. It's all about make them, Javagal Srinaths and the Venkatesh Prasads or Kapil Devs of tomorrow. So for me, what is very, very important is to, I think यार nation के लिए, भारत के लिए, इंडिया के लिए खेलने के लिए देख रहे हैं सब लोग, not any other thing. The priority should be, यार मैं भारत को खेलना है, इंडिया को खेलना है. It's just how should they train? क्या चीज का ध्यान? Do's and don'ts. I think मेरा ख्याल से lesson for them. मेरा ख्याल से आपने कोच भी किया है. Yes, मेरा ख्याल से क्या हो रहा है? I think a lot of them are training in the gym and not bowling fit. Especially bowlers are getting injured, and that's only because they're not bowling fit. They're not bowling. Whether Javagal Srinath, who is the quickest bowler India has ever produced, जब मैं उनके बारे में बात करता हूँ, when I talk about Srinath, वो हर practice session में minimum एक घंटा minimum bowling डाल रहे थे. और Anil Kumble, being a spinner, okay, he used to bowl for 2 hours minimum. So, and I used to bowl, yes, I used to bowl from start to end. For 3 hours I used to bowl, 3 hours I used to bowl. And I loved bowling, of course. And of course, I used to also field and so on and so forth. But now what is happening is that amount of bowling, which is supposed to, a bowler needs to have under his belt, he's not having that. He's not bowling that much. I think that's what is missing out. नहीं है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है. It's not about मेहनत तो कर रहे हैं, मगर मेहनत किधर कर रहे हैं? उन लोग जिम में कर रहे हैं मेहनत, ज्यादा जिम कर रहे हैं, वही बोल रहे हैं. So it's not bowling fit. They're strong, but they're not bowling fit. इसीलिए उन लोग break down हो रहा है. Whereas, see, it's all about repetitions. It's deliberate practice बात करते रहते हैं. हम repetitions के बारे में बात करते रहते हैं. Why batters are doing extremely well now is because they repeatedly keep playing. उधर throwdowns होता है, बाद में bowling machine रहते हैं, बाद में उन लोग जाके bowlers को खेलते हैं, बाद में knock करते रहते हैं. So they keep on batting. But I don't see that in bowlers. They don't keep on bowling. So when can you bowl that line and length? When you can execute your skill, your variation is only when you keep on bowling. Which the normal... जिम की फिटनेस काम नहीं आएगी जब वेंकटेश प्रसाद अभी भी 50 पार होने के बाद भी इतने फिट हैं. इनकी फिटनेस के इस राज को हर खिलाड़ी आगे जाकर भी अपनी फिटनेस पर काम करता है, लेकिन कुछ खिलाड़ी शायद उसको उस तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते जितना अभी भी इतने पैशनेट हैं. मैं इस इंटरव्यू के पहले भी हम चाय कॉफी पर जब गपशप कर रहे थे तो इनकी फिटनेस के बारे में बातें सुनकर ही मैं उसमें गुम सा गया था कि अभी भी इतने ज्यादा अपनी फिटनेस को लेकर ये आपकी इस फिटनेस का राज क्या? अभी भी कितना वर्कआउट करते हैं आप? No, look, मैं अभी 1 घंटा तो वर्कआउट करता हूँ हर दिन 6 दिन करता हूँ मैं ऐसे. तो एक दिन I'll take a break for my, I need that break. Having said that, अभी मैं 3 to 4 sessions of gym and 2 session में long distance running 10K मैं करता हूँ. 10 kilometers 2 days a week. Yeah, this is my and 10 किलोमीटर. Yes, अभी भी दौड़ते हैं वेंकटेश प्रसाद जो अभी युवा हैं, वो भी शायद इस तरह की फिटनेस की रेजिम को नहीं फॉलो करते. Sir, and also I have to say that I follow intermittent fasting. So I have only 2 meals a day. I'm a vegetarian. Throughout my life I've been vegetarian. Even while playing I was a vegetarian. Okay, and discipline रहना है. आप एक घंटा आप देना चाहिए आपका बॉडी के लिए, कसरत करना चाहिए.
और आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए. So that is when you can be अगर fit. किसी को वेंकटेश प्रसाद जी का ईयर ऑफ बर्थ नहीं पता होगा तो वो उनकी उम्र का अंदाजा लगा नहीं पाएगा. इतने फिट वेंकटेश प्रसाद जी अभी भी हैं. और ये सबक है युवाओं के लिए, हम सभी के लिए, कि उम्र को आप पीछे छोड़ सकते हैं अगर आप फिटनेस को लेकर उतने अनुशासित रहें, उतने डिसिप्लिन रहें, अपनी फिटनेस को लेकर उतने ज़्यादा जागरूक रहें. And also, I would like to add one more thing. You have to keep on learning. You have to keep on learning because learning never stops. As चाहे आप fitness हो या चाहे आपका knowledge हो. Because recently, just 2 years back, I did my post graduation in international sports management from University of London. मैं last year मैं London में था. Yes, to know about sports, to know about the strategies, governance क्या होता है, strategy क्या होता है sports में, आपका sports जो organizations जो रहता है उसको कैसे मैनेज करना है. सो ये सभी सीख रहा था मैं. एंड लास्ट जून में आई वाज इन लंदन फॉर माय ग्रेजुएशन सेरेमनी. सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. इतना शानदार उदाहरण. अभी भी सीखने की ललक खत्म नहीं हुई. अभी भी डिग्री ले रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, लंदन जाके स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं वेंकटेश प्रसाद. मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने लायक है. मेरे लिए भी बहुत बड़ा सबक है कि आप सीखना कभी बंद नहीं करते हैं. हमको लगातार सीखने की अपनी जो जिद है उसको कायम रखना चाहिए. तो आपको ग्रेजुएशन हो गया लंदन से? Yes, of course, I finished. I went for a sports management. It's a post graduation in कितना sport. लंबा कोर्स था ये? It's an year course where I have to एक साल का कोर्स था. And I used to spend 4 subjects I have to clear 2 core subjects and 2 electives लिया था मैं. And you have to finish that to become a postgraduate. And I used to spend 5 to 6 hours every day studying. 5 to 6 hours every day studying for that course. नहीं, एज का बात नहीं है, इट्स इंटरेस्ट का बात है, पैशन का बात है. So if you're keen. तो ऐसे में फैमिली को कैसे टाइम देते हैं? Look, जो भी करना है आप, I think without your family support, I don't think you can do anything. Yeah, so in that sense, my wife and my son, they were really behind me and they supported me a lot. And that's one of the reasons why I was able to achieve. How old is your son now? 26. What's he pursuing? He's having his own startup. He's an entrepreneur. Startup, right? Yes. Bangalore is place for startup. I suppose, I don't know. I'm not a business. Yeah, I'm from the old school. What's his name? Prithviraj Prasad. Yeah. No, not into cricket or anything. He was, but then at some point he just said no, I can't play, and it's not easy. Yeah, it's not easy to play a sport. You have to have a lot of sacrifice. But then he's extremely fit, very very fit guy. He does a lot of training and he's doing his own thing. Obviously, आप फिटनेस के बिना तो उसको कुछ करने नहीं देंगे. नहीं, I never force anything. I never force anything. It has to come from within. आपके अंदर से आना चाहिए. हमने अभी गुलपनाग और उनके फादर का पेरेंटिंग का सेशन भी सुना. तो probably same thing. Absolutely, yes. Goes on with your son as well, right? I suppose. You want to share the tips you gave, the kind of chemistry you share, the father-son relationship? Well, look, I never forced him to take up the game or leave the game. He was extremely passionate till he was 16. When he turned 16, he said, I'm not going to play cricket anymore. Because all I said is, look, if you want to make it big, you have to sacrifice a lot. You have to be disciplined. You have to get up. You have to work hard. Nothing comes easy in life. Nothing comes easy in life. You have to sacrifice. You have to be disciplined and you have to work hard. And follow your passion, no matter what it is. No matter what. Be it arts, be it science, be it commerce or whatever it is. Follow your passion. And if you dedicate yourself, if you commit yourself to that passion, you can do anything, you can achieve anything. But आप work life balance बना लेते हैं. आप commentary भी कर रहे हैं, आपको course भी करना है, लगातार travel भी करना है, तो लेकिन family के लिए भी time निकालना. 100%. I'm a complete family man. And जब मैं वापस जाता हूँ घर को, I don't step out of my house anywhere. And for me, late nights and all doesn't suit me. I get up at 4:50. 4:50. भैया केवल अक्षय कुमार नहीं उठते हैं जल्दी, सुन लीजिए. अच्छा, okay. अक्षय कुमार बहुत famous हो गया ना 4 बजे उठने के लिए. Oh, okay. I know. For me, I get up at 4:50. Even if you look at my alarm, it's at 4:50. I get up at 4:50. Then I go to my training by say about 5:55. I leave my house for my training, and 1 hour training. Come back at 7 o'clock. Take my dog for a walk, and then that's how and I come back home. Even wherever I go. नहीं करते हैं. Huh?
You don't take breakfast in the morning. That's No, I skip breakfast. It's intermittent fasting that I follow. It's 2 meals a day, so that's how it is. सब बड़े मनोज वाजपेयी का एक साक्षात्कार में देख रहा था, वो रात का खाना नहीं खाते, हाँ, सुबह का ब्रेकफास्ट मैं breakfast नहीं खाता हूँ. But yeah, look, I also train in the mornings. I don't know whether it's good or bad, but it has suited me. Yeah. I've never done in the evening, so I also so don't not fit as you, but I try. नहीं, So good. so at the end of बहुत अच्छा बातचीत आपसे चल रही है, बहुत मजा आ रहा है. एक थोड़ा सा रैपिड फायर करते हैं. Okay, जी. आपकी फेवरेट डिश? South Indian mainly. Any one dish you have to name it. South Indian इडली है, सांभर है, क्या है, वो डोसा है, उत्तपम है, उपमा है. Have you heard of Bisibelabat? Yes, we have. Okay, I like it. Very nice. That's what it is. दही और चावल का एक मिश्रण होता है, बहुत सुंदर डिश होती है. नहीं, वो नहीं है. फिर क्या है? वो एक्चुअली सांबर राइस बोलते हैं इसको, बट इट्स अ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होता है उसमें. या क्या होता है? आप कुक करते हैं? No, never. Oh my God, that's something which I don't do. But I keep my place very, very clean. Yeah. So जो प्लेयर्स थे, मेरा जो साथी लोग थे टीम में, they used to dread sharing a room with me because यार अच्छा रखना है, नीट रखना है, सफाई रखना है, ऐसे. के नहीं रखना है. Absolutely. Yeah. Favorite movie? Oh wow, plenty of movies. Any one? Oh my God. Either Hollywood or Kannada, whatever, or Hindi. You watch Hindi movies? आप हिंदी मूवी देखते हैं? Oh, देखता हूँ मैं, of course. तो आपकी फेवरेट हिंदी मूवी कौन सी है? Yeah, suddenly I don't think I can really get that off. I love my Kannada movies, which was movies that was Dr. Rajkumar का गंधा द गुड़ी, ऐसे भी. I mean हिंदी की कोई भी मूवी जो आपको याद आ रही हो? हिंदी बहुत सारा मूवीज देखा हूँ मैं. आखिरी मूवी कौन सा देखा? रैपिड फायर है सर. I don't even remember यार, इतना हॉलीवुड मूवी I mean बहुत सारा. I mean एक नाम जो टॉप ऑफ Titanic and and बहुत सारा Tom Cruise movies and of course yes, yeah, a lot of movies like that, yeah, and Castaway, even Tom Hanks movie. And The Reader करके एक movie है. It's a beautiful Kate Winslet का. It's amazing movie. I love that movie. Titanic. Yes. It's a very different movie. I've seen The Reader. Yes. My favorite actors have been favorite actors have been Tom Cruise, Julia Roberts, and Tom Hanks, and so on. So those are my. Oh yeah, of course, yes, of course, yeah. हिंदी मूवी का जो Sir, I've watched a lot of movies. Favorite actress? Amir Khan is one of my favorite actor. Then Amitabh Bachchan is of course a favorite actor. Actress I always loved Madhuri Dixit. It's my generation, I would say. Of course, there are plenty of. You're blushing while taking name of Madhuri Dixit. आपने कभी एडवर्टाइजिंग तो किया, मूवी में जाने का कुछ ऑफर वगैरह नहीं आया क्या? आता रहता? No, not at all. अगर आपको किसी एक एक्ट्रेस के साथ मूवी अरे सर किधर लेके जा रहे हो हमको? रैपिड फायर है सर. सर ये तो है, कभी मौका मिले तो कौन होगी हीरोइन? अभी मौका तो चला गया. नहीं अभी किया ना. आपकी फिटनेस तो बहुत ही अच्छी है. फिटनेस चला गया, but no, I don't even know. I'm sorry, I can't answer that question. आप बचना चाह रहे हैं? बता दीजिए ना. अब तो क्या है, वो मौका चला भी गया. माधुरी दीक्षित सर किधर? Somebody wants to cast you, against any hero. So which one? See, I might like to act. I might like to act, but they also need to reciprocate. अरे यार ये इंटरव्यू देख के ओके कर देंगे तो? कोई नहीं करेगा ओके. आप बोल के तो देखिए. No, I don't know. I'm sorry, I can't. माधुरी दीक्षित. I can't. I don't know what to say, honestly. Yeah. Your favorite tourist destination, where you want to go? Oh wow, plenty. Australia, England especially. I love England. Okay. I love England. Yeah. Favorite book? I used to read a lot of books. Of late, I'm not reading many books. But Freedom at Midnight was something which I liked. Yeah. A lot of Jeffrey Archer. A lot of books I used to read. A lot of novels I used to read. I used to read a lot of these
क्या है, हैरी पॉटर का बहुत सारा मैं पढ़ा, मैं उसके बाद मैं छोड़ दिया. या एग्जैक्टली. फेवरेट क्रिकेटर, ऑल टाइम फेवरेट? कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, Rahul Dravid, Anil Kumble, Javagal Srinath. Yeah, absolutely. Any favorite sports person other than cricket? Other than cricket, Rafael Nadal is my favorite person. Favorite sportsman, Rafael Nadal. Oh yes, absolutely. Yeah. And this time I didn't watch Wimbledon because he was not playing. Can you believe it? And even finals because it went to the. Star there, yeah. Haji, yeah. That because it was getting close, and that's when I watched it later on. But Rafael Nadal is my favorite tennis player. Yeah, and sportsman. अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते? Oh, I would have been in Air Force. Air Force? Yeah, Air Force. Yeah, I love armed forces and especially Air Wing because I was in the Air Wing. I wanted to get to the Air Wing. Well, I was in the Air Wing in my school and I wanted to get to the RD parade especially. Yes. Okay, I didn't make it, and that's where my Haji is no RD parade because I had to clear a 4K run. Right. And the top 15, got selected, and I came 17th or 18th, so I couldn't get. I was not selected, so that's where I missed out. And then finally, that's how it went. Yeah. Air Force is good. I mean, that was something probably not known to many. Yeah, I loved, and I did. मैं बहुत camps को गया, aero modeling, ये वो सभी कर रहे थे हम लोग. Yeah, I mean, I loved Air Wing. Yeah, हाँ जी. चलते चलते आखिरी टिप्पणी उन युवाओं के लिए, आप हमारे amarujala.com के कैमरा से बात करेंगे कि क्रिकेट को लेके बहुत पैशनेट है, सबको लगता है क्रिकेट में बहुत पैसा है, क्रिकेट में बहुत शोहरत है, क्रिकेट स्टारों को बहुत सारे करोड़ों रुपए आजकल T20 आने से जल्दी मिल जाते हैं और लोग बहुत सारे इंटरव्यूज करते हैं. Yes. Myth or reality? How do you want to address them? I don't want to get to that myth or reality, but the point is like, look, it's extremely important to play for your country. I mean, talking about cricket, आप country के लिए represent करने के लिए देखो आप, and you'll reach eventually. If if you're good to play for the country, you will play IPL, you will play T20s. ये सभी होता है. And nothing comes easy. If you think that T20s में ज़्यादा पैसे, IPL में ज़्यादा पैसे, आप कर सकते हो, एक साल खेल सकते हो, बाद में या 2 साल खेल सकते हो, बाद में it is not going to take you for long. Having said that, what's very important is be a cricketer, be a footballer or a hockey player or or a doctor or engineer or whatever it is. Follow your passion. You can be an artist. If you want to be an artist, be an artist. Follow your passion and dedicate or commit to that passion of yours. क्रिकेट में ज़्यादा पैसा है, आपका स्किल नहीं तो भी क्रिकेट खेलना ऐसे ही नहीं होता है. So try and be original. Try and follow your passion. That's all I can tell you. And you have to work extremely hard to achieve something. Without hard work, nothing comes. Nothing comes easy. Nothing comes easy. वेंकटेश प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद amarujala.com से बात करने के लिए. हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरह फिट बने रहें, इसी तरह देश के युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करते रहें और आप इतने ही सहज और सरल बने रहें. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. नमस्ते. अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी. अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में. और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर. अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर.